नमस्कार दोस्तों, माइनिंग की सभा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कोल माइन रेगुलेशन 2017 का चैप्टर 1 का एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोल माइन रेगुलेशन 2070 हैव कम इनटू द फोर्स फ्रॉम द डेट। मतलब कौन सा डेट में कोल माइन रेगुलेशन 2017 बनाया गया है। इसका पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। कोल माइन रेगुलेशन 2070 इज एप्लीकेबल टू। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा एवरी कोल माइन। द कोल माइन रेगुलेशन 2070 were released by the notification of which मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। An assistant manager means a person possessing a manager certificate appointed in writing by the owner, agent or manager to assist the manager in task of the mine or thereof। इसका ऑप्शन नंबर ए है मैनेजमेंट, बी कंट्रोल, सी सुपरविजन, डी ए बी सी, ई बी एंड सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ABC, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is true? Auxiliary fan means a forcing fan used in, option number A, a forcing fan used in below ground, B number, a forcing fan used in above ground, a booster fan used in below ground, a man mechanical ventilator, none of above। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, a forcing fan used in below ground mount। क्वेश्चन नंबर 6, forcing fan and exhausting fan used in below ground only or mainly for ventilating one or more phases forming part of the ventilation district is known as auxiliary fan। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, auxiliary fan। 7, a mechanical ventilator used below ground for improving the whole current of air passing along the intake or return airway of a mine or ventilation district is called ventilation fan। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी auxiliary fan। ऑप्शन नंबर सी booster fan। ऑप्शन नंबर डी अंडरग्राउंड फैन, ई नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी बूस्टर फैन इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, बूस्टर फैन मींस अ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड इन बिलो ग्राउंड। ए नंबर, वेंटिलेशन वन और मोर फेसेस, बी नंबर फॉर बूस्टिंग द होल करंट ऑफ एयर अ माइन और वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर सी फॉर बूस्टिंग द टू मींस the incoming air current to the ventilation district। option number D for boosting the 3 times of incoming air current to the ventilation district, none of above। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी for boosting the whole current of air a mine or ventilation district। अब क्वेश्चन नंबर 9, under coal mine regulation 2070 average output means A, average output per year during the preceding final year, average output per month during the preceding final year, और option number C, the average output per year during the preceding 3 financial year। option number D, average output per month during the preceding financial 3 year। option number E, none of above। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 10 नंबर, कमेटी डिफाइंड अंडर रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 ऑफ द CMR 2070 as means a committee appointed under the CMR 2070 means appointed under section of Mines Act 1952 means C। option number C means a committee appointed under rule 19
55 means a committee appoint under Section 12 of Mines Act 1952 means appoint option number E means appoint under the Section 9 of the Mines Act 1952. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी means committee appointed under the Section 12 of Mines Act 1952. 11 number. Minimum age for a person to be appointed as a competent person shall not be less than A number 21 years, B number 19 years, C number 20 years, D number 18 years, E number 22 years. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 years. A competent person, a person, the number A, who has attained the age of 20 years, who has been duly appointed in the writing by the manager as a person competent to supervise and perform that work, who is responsible for the duties assigned to him, including a short fire. B, all of the above. इसका आंसर होगा B, who has been duly appointed in the writing by the manager as a person competent to supervise the perform that work. Question number 13. Competent person is appointed by option number A, manager, B, agent, C, CMD, D, DGMS, E, owner. Option number A, manager. The flying person is not an official but competent person. A, assistant manager, B, sampling agent, C, overman, D, short firer, E, mining sardar. D. आंसर होगा डी, short firer. Deep hole drilling and blasting is defined as the drill holes more than dash meter in depth and used for blasting in open cast mining operation. इसका आंसर होगा बी, 3 मीटर. Work in a mine where work has been temporarily stopped but which is accessible and include unused working is called A, old working, B, disused working, C, working place, D, abandoned working, E, discontinued. इसका आंसर होगा B, disused working. Question number 17. Means such working in a mine where work has been temporarily stopped but which are accessible and include unused working. 17. A, disused working, B, discontinued working, C, unused working, D, accessible working, E, none of them. तो इसका आंसर होगा A, disused working. The moving front of any working place or end of any gallery is called A, face, B, working place, C, heading, D, gob. A, face. Number. Fiery seam means a seam in which fire spontaneous heating exists in the working below ground or in open cast working lie within the 7.5 meter of a mine, 15 meter of a mine, 45 meter of a mine, precincts of a mine, 60 meter of a mine, precincts of a mine. 20. Financial year of a mine means period of 12 months each. 1st July to 31st June. B, 1st April to 31 March. C, 1st January to 31 December. D, 1st March to 28-29 February.
ई नॉन अवेलेबल। इसका आंसर होगा बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।